हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम अरविंद है और हम हैं हैदराबाद बॉयज, वेयर वी टॉक ऑल थिंग्स क्रिकेट। विद मी आई हैव सौरभ। Hey everyone, Saurabh here. Namaste, hello. इट्स अ कोइंसिडेंस कि हम लोग दोनों ने सनराइजर्स हैदराबाद कलर ऑरेंज का पहना है। दैट दैट इज कंप्लीटली लाइक अनप्लान्ड। बट yeah, please continue to like our videos. Please share and please subscribe. If you like the content what we're producing on IPL previews, please definitely like the video. It doesn't cost more than few seconds of your time. uh, let's continue. हमने ऑलमोस्ट 5 टीम्स रिव्यू कर लिए हैं। लास्ट हमने रिव्यू किया था दिल्ली कैपिटल्स, तो आज हम बात करते हैं नंबर 4 ऑफ लास्ट ईयर विच इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। काफी व्हाट डू यू कॉल, काफी उनका उमदा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, बट दे हैव नेवर वन द आईपीएल। They are based out of Bangalore. To just give a quick overview of our Royal Challengers Bangalore (RCB). इनके कप्तान हैं फैफ दुप्लेसी, कोच हैं संजय बांगड़, और टीम खेलती है अपना गेम्स, होम गेम्स एट चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। और इनके स्टार प्लेयर हैं इंडिया स्टार प्लेयर किंग कोहली। They always had good players, but they unfortunately have never won IPL ever. 3 बार रनर अप हुए हैं। 2009 में they came in finals, lost to Deccan Challengers, and then they lost again in 2011, and they also lost again in 2016. पिछली बार actually they came in third, so they didn't come fourth. I made that mistake. They came actually third. But हाँ, तो उनके बारे में अभी बात करते हैं। Let me share my screen, and then we'll see the squad, and let's talk here. क्या लगता है? वी हैव, फॉर आवर पीपल हु आर लिसनिंग ऑन ऑडियो, इफ दे आर नॉट लुकिंग एट द यूट्यूब वीडियो, हमारा स्क्वाड यहाँ है: फैफ डुप्लेसी, आकाशदीप, अनुज रावत, विनाश सिंह, मनोज भंडागे, मोहम्मद सिराज, माइकल ब्रेसवेल, वनिंदु हसरंगा, जॉर्ज हेजलवुड, दिनेश कार्तिक, सिद्धार्थ कौल, विराट कोहली, महिपाल लोमरोर, सोनू यादव, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल, सूर्याश प्रभुदेसाई, राजन कुमार, शहबाज अहमद, हिमांशु शर्मा, कर्ण शर्मा, Reece Topley, David Willey, and Rajat Patidar, who may have fitness issues. Will Jacks को already ruled out हो चुके हैं. Yeah, so let's talk Royal Challengers Bangalore. Saurav, क्या लगता है? Looking at the team, are they placed better than last year on the squad? I mean, before I start that analysis, I think RCB मेरी historically, even though मैं IPL और T20 का उतना बड़ा फैन नहीं रहा हूँ, स्पेशली ये लीग वाले T20 मैचेस का, RCB has been close to my heart, primarily due to AB de Villiers. लेकिन अब AB de Villiers 2-3 साल से नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह फाफ डुप्लेसी आ चुके हैं। सो और तो थोड़ा बहुत एक है हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए आरसीबी के लिए। लेकिन अगर आप स्क्वाड के बारे में बात करें, मुझे अब there's a little bit of hesitancy that I basically have as far as RCB is concerned. अगर आप बोले कि स्क्वाड अच्छा है और मुझे लग रहा है कि अच्छा है, यू हैव हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है उनकी बॉलिंग। और एक और प्रॉब्लम रही है whenever they have played in India, चिन्ना स्वामी उनके लिए भी एक प्रॉब्लम रहा है। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि कभी कभी चिन्ना स्वामी बिकम्स टू बैटिंग फ्रेंडली, इवन दो लेट्स से दे पुट अप अ गुड स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स। आई थिंक उनकी बॉलिंग, आई थिंक पोस्ट मिचेल स्टार्क, बहुत साल पहले जब मिचेल स्टार्क तक थे तो मुझे लगता था कि बॉलिंग थोड़ी ठीक है। लेकिन आई थिंक पोस्ट मिचेल स्टार्क लेफ्ट, मुझे मुझे जैसे याद है हर्षल पटेल, उमेश यादव, उनकी फास्ट बॉलिंग मुझे उतनी स्ट्रांग नहीं लगी है। लेकिन इन द रीसेंट पास्ट आई थिंक जॉश हेजलवुड आए हैं। लास्ट ईयर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन जॉश हेजलवुड मुझे ज्यादातर ऐसा लगता है कि ही इज गुड स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बॉलर। मुझे लगता नहीं है कभी कभी कि दैट ही कैन बी अ गुड डेथ बॉलर। वनिंदु हसरंगा हैं। मुझे बैटिंग उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, हालांकि अभी एबी डिविलियर्स नहीं है, क्रिस गेल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बैटिंग इज क्वाइट डिसेंटली कवर्ड
फाफ हैज बीन प्लेइंग वेल, हालांकि मतलब फाफ इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कि देयर आर टॉक्स कि भाई उनको साउथ अफ्रीका T20 में वापस लाने की सोच रहे हैं. Virat Kohli has come back into the form, so I think that's going to be a very big plus for RCB because last 2-3 सालों से विराट कोहली का फॉर्म ओवरऑल across formats, across international as well as the IPL as a league, उनका उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि अब उनका फॉर्म वापस आ गया, so that's a big plus for RCB. तो दिनेश कार्तिक हैं, who I think in the last season I think he did a pretty decent job as far as closing out the matches is concerned. ग्लेन मैक्सवेल हैं, ही कैन बी अ हिट एंड मिस, लेकिन उन्हें आईपीएल में आई थिंक लास्ट 2 बार से खेल रहे हैं आरसीबी के लिए, ही इज डन प्रीटी ओके. तो वो भी हैं. रीस टॉपली और डेविड विली, आई थिंक दे आर गुड एडिशंस, स्पेशली रीस टॉपली विकेट्स भी ले लेते हैं, और जितना उन्होंने इंग्लैंड के लिए परफॉर्म किया, ही इज बीन अ डिसेंट परफॉर्मर. तो मुझे लगता है वो एक अच्छा एलिमेंट ऐड करेंगे इन दी फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज ऑफ आरसीबी. कभी कभी लग रहा है कि वी टीम देखे कि ऑल द बेसिस आर कवर्ड, लेकिन अगेन आई एम नॉट एबल टू पॉइंट आउट एग्जैक्टली वेयर दे आर मिसिंग आउट. तो आपको क्या लगता है अरविंद? आई मीन वेयर एग्जैक्टली तो माय असेसमेंट इज, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट असेसमेंट है, ऑल्दो वी बोथ एग्री कि थोड़ा हेजिटेंसी है, बट माय असेसमेंट हियर इज, मेरे को उनका एक्चुअली बॉलिंग ठीक लग रहा है. मेरे हिसाब से उनकी बैटिंग वीक लग रही है, इवन दो वी हैव विराट हु हैज कम इनटू द फॉर्म, हु इज प्रोबेबली द mainstay of the team and will decide the fortune of the team. um I actually do not find RCB improved over the last year. मुझे कोई additions नहीं नजर आ रहे हैं जो टीम को improvement लाए हैं to get to the top two and to the win it. अगर आप बॉलिंग देखोगे, let me start from the bowling aspect quickly. मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल has done exceedingly well for RCB, and मोहम्मद सिराज has done very well for India or in the recent times. तो उनके मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड, वनिंदु हसरंगा, ग्लेन मैक्सवेल, आपका एक ये जो कोर बॉलिंग लाइनअप जो आ गया है, स्पिन और फास्ट का एक सेटअप हो गया है. सिद्धार्थ कौल भी बॉल कर लेते हैं इफ आई रिमेम्बर राइट, सो इफ दे वांट टू मिक्स अप विद एन इंडियन दिस थिंग. वेयर आई एम हैविंग कंसर्न इज बैटिंग. अगर आप देखोगे टॉप ऑर्डर, इंडियन फाफ कंटिजेंट. डुप्लेसी फाफ डुप्लेसी ओपन करेंगे और विराट कोहली आएंगे आपके नंबर 4 पे. रजत पटीदार हैज डन वेरी वेल ऑन नंबर 3 लास्ट ईयर. उनको लेटर हाफ में आई थिंक ही आल्सो स्कोर्ड अ सेंचुरी. उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है. बट अगर आप देखोगे ओपनर आकाशदीप हैं, यू नो आई डोंट नो हु एल्स इज देयर, एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई एम सीइंग अ प्रॉब्लम देयर. ग्लेन मैक्सवेल आपके नंबर 5 नंबर 6 पे आ जाएंगे. आपके ओपनर और आपका ये नंबर 3 4 5, ऑल्दो विराट हैं, देर इज नथिंग स्टैंड आउट देयर. अगर फाफ डुप्लेसी आउट हो गए, प्रेशर पूरा विराट पे आएगा in terms of trying to get the runs sticking, and for Virat to succeed he needs the openers to do really well, and then he could come in and then take the innings and then obviously get till that 13th 14th over. Uske baad Maxwell, they expect Maxwell and Dinesh Karthik, who has done very well in the recent times and hitting up and trying to close innings. तो मुझे वो बैटिंग एट 6 7 8 9 से बड़ा ठीक लग रहा है इनका, and Virat at 4, for me the top 3. And if Rajat Patidar probably is number 3, I actually have concerns कि एक यहाँ पे collapse हुआ, एक या दो विकेट, there's a lot of pressure on them. So it करेक्ट. looks good team, it looks a good team, but it is not a winning team. It is not a team which is screaming favorites to win IPL 2023. मुझे कंटिन्यू लग रहा है कि आरसीबी कंटिन्यू करेगा another year where they won't be able to win it. If they do really really well, bowling पे अच्छा, if Hasaranga has done well, Hasaranga is a good all-rounder बोल सकते हैं, Hasaranga will do well. दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, तो एक वो कोर मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर अच्छा सेटअप है, बट इफ टॉप ऑर्डर फेल्स दे आर इन ट्रबल. तो उस मामले में मुझे एक दो वो छोटे वीकनेसेस लग रहे हैं. करण शर्मा है, सुयाश प्रभुदेसाई हैं, आपने रीस टोपली और डेविड विली की बात करी है, मुझे लगता है इनको चांस शायद बहुत कम मिलेगा, क्योंकि 4 कम आपके मिलेगा, ऑटो सेलेक्ट हो ऑलरेडी रहे कवर हैं है. विद वनिंदु हसरंगा.
Josh Hazelwood, Glenn Maxwell and Faf du Plessis. तो शायद अगर पिनिंग स्टीम ट्रैक है तो शायद हसरंगा if he's not not contributing with bat, they may give a chance to Tupli or Willie as an option. But yeah, they may are, if they had one more Indian player who's swashbuckling, शायद वो आगे बढ़ पाएंगे. But yeah, looking at the team, I don't think they're cut out to win IPL 2023. If they do really well, they could get into the playoffs. I actually don't think they'll qualify for playoffs too. Yeah. I think as soon as he started to speak, I just found out there's a gaping hole in their batting. I mean, apart from Virat Kohli, as you rightly said, कोई Indian strong batsman नहीं है. Rajat Patidar, I think he's an opener, जैसा मुझे याद है. He came last time at number 3. हाँ, He's done well. So again, last he's time it done was a well. little bit, it's a little bit of pressure on him. And वो last time थोड़ा mask हो गया था because Faf was in a great form. But if the openers go I think out, pressure is on Rajat to cut through. Yeah. I think you actually hit the nail on the head. I think last year there was time that Virat Kohli also opened the batting with Faf. Correct. And तो बीच में अगर फिर आकाशदीप Faf भी आ गए थे बाद में when Virat moved to 3 and 4 and then Rajat came to 3. तो 4 वही है. तो मुझे वहां पे एडिशंस ऐड नहीं हुए जो होम एंड अवे गेम में with the changing tracks, changing conditions. Pressure is on Akash or Rajat. मुझे लग नहीं रहा कि I think has far. I mean, it's immense pressure on openers and on top order. Yeah, I mean, I think अगर Faf or Virat, if they are opening, I think 3, 4, 5 मुझे काफी वीक लग रहा है. I mean, as soon as you started to speak और थोड़ा आपने जैसे हाईलाइट किया, मुझे लग रहा है कि yes, you are actually very much right. Correct. They may हालांकि give माइकल chances to. Sorry, go ahead. Michael Yeah, Bracewell. मतलब वही, I think Michael Bracewell है, Finn Allen है, लेकिन again you can only play 4 overseas player. Correct. वही एक देखते हैं शायद impact player वगैरह का कहीं पे they might utilize them. They have some interesting players. Mahipal Lomror हैं, वो पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं. If I remember right, he comes in very handy as well. It's just that they need to find that balance, and if it's just a little bit, batting seems a little bit having an issue. अगर wickets उड़ गए तो they are in trouble, I feel. But overall, yeah, it's a good team. I don't feel there's much change from the last year in terms of what they've done. So yeah. I think ज्यादा pressure मुझे लगता है Faf और विराट कोहली पे होगा to make sure they get a good start. They get a good start. I think they'll be relying. Sure. I think they'll be relying on them to at least get this 50+ partnership Correct. on the board. Yeah, तो I think minimum एक requirement रहेगा उन पे. और मुझे लगता है वनिंदु हसरंगा, I think he did well, लेकिन उन पे ज्यादा. Then the lower mid order is very nicely set up, but yeah, the top order needs to fire for them to win this. Bowling looks good. I actually don't see concerns in the bowling. They have a very good lineup. So yeah, let's end there. Where क्या लगता है? Do you think qualify कर पाएंगे? Qualify playoffs में? So who have we said कि from our past reviews that who are? हमने already Sunrisers और Chennai Super King को बोला है कि they are in and around. And Delhi Capitals may also sneak in if they go well. So मुझे already ये. I mean, if I don't see them in top 5. Capitals. Yeah, I mean, if Delhi Capitals is what we are saying, they might sneak in. I don't think so. They are as good as Delhi Capitals. So yeah, so I have a feeling, unfortunately, and we'll do another video of predictions and all of that. But yeah, I'm not predicting them to be in top 4. Even if I mean, unless and until unless and until you're like talking ki Virat Kohli is going to have a 600, 700 plus, and scoring Glenn season. Maxwell makes those sixes and takes wickets in those tracks. Takes wickets. Supporting Siraj and supporting Harshal and be that spin guy for them. So basically all your stars. So Shabaz Ahmed is also another player who spins. आपके अगर stars ने contribute किया तो शायद they miss push for a qualification, but so basically they need all the stars coming together for their stars performance. Correct. सारे stars align होने चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए और मुझे लगता नहीं है कि वो होगा. हाँ, I think 14 गेम बहुत मुश्किल है इतने without. ठीक है.
Chalo, फिर we'll end it here on this Yeah. one. So thank you everyone for watching. Our IPL preview series will continue. Please keep continue, subscribing, sharing with your friends and family, and please hit that like button. Thank you. We'll talk again later.